Hello everyone. Guys, this video is a follow-up video for one of our earlier very popular videos. Thank you actually for making it so reasonable and so reachable to the audience. The one I'm talking about is property versus stocks. So this video is a follow-up video for that one, and here today I'm going to tell you how we can break it up, that 60 lakh rupees. If you remember, I'll do is, for the benefit of new subscribers and people who are following this video, I'll share the link of the earlier video, property versus stocks, in the comment section. So if you're watching this, look at the comment section, watch that video first, and you will get this follow up. So today in this video we are going to discuss how to a basic framework of how we park 60 lakh into SWPs, which is systematic withdrawal plan. First thing first, though, you have to figure out which are the mutual funds which are giving you this facility of systematic withdrawal plan. To my understanding, most of the progressive funds, good fund houses are giving this option. SIP बहुत common है. Systematic investment plan, as I said, is for people who have monthly regular income, and that's a separate case. But systematic withdrawal plan is the new novel facility, which is not very common right now. This is for people who have lump sum chunk of, in that example we had taken, 60 lakh. तो उसमें सबसे पहले the golden thumb rule of investing says never put all your eggs in one basket. So what we recommend to our premium members and also to a lot of other members, जैसे हम लोग financial consultancy देते हैं, तो जितने हमारे प्रीमियम हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से we recommend stocks and mutual funds to them. बट आइडियली आई कैन गिव यू अ सेक्टर, एंड मैं आपको एक बेसिक ब्रेकअप इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आप 60 लाख को डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक 5 पैकेट्स ऑफ दैट 60 lakh, 5 different baskets you have to make. The first basket will be 12 लाख रुपीज़ का आप एक ब्लू चिप्स का स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो अपना बनाइए. ओके, 12 लाख रुपीज़ में ऑल द गुड स्टॉक्स दैट, अगर आप हमारा चैनल देखते हो, हम लोग बातें करते रहते हैं, उनको इक्वली डिवाइड करके 12 लाख इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में डाल के रख दीजिए एवरी ईयर, इन अ वे दैट दोज 12 लाख के स्टॉक्स ग्रो 18%. 18 to 21% अगर लार्ज कैप्स हैं, ब्लू चिप्स हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है, तो दे विल ग्रो इन दैट रेंज. सो 12 lakh goes there. The second packet, the other 12 lakh goes into something called Nifty ETF. Benchmark Nifty जो है, जो हमें लगता है यहाँ से at least every year for the next, in that video we have taken 15 years. तो अगले 15 साल का अगर मैं reasonable assessment लेता हूँ, तो for the next 15 years every year, I think the benchmark Nifty will give us at least 12% returns year on year. तो वो 12% के हिसाब से एक कोई भी अच्छा निफ्टी ETF अगर आप चूज़ करें, तो 12 lakh second packet goes there. Third packet में you can play a little sensible, you can park it in another ETF. It could be a matching ETF. I don't want to take the name of the commodity here because that advice is only for our premium members. But एक तीसरा matching जो भी आपको comfortable लगे, वो zone आप पकड़ के वो third packet भी उसमें park कीजिए. फोर्थ एंड फिफ्थ पैकेट, यानी 12 लाख जो बच गए हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पैकेट में, यू विल हैव टू एलोकेट इट टू सम अग्रेसिव हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको. पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है, दैट्स अ ग्रेट म्यूचुअल फंड एक्चुअली. इट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, बट disclaimer, please consult with your financial advisor before taking a call. Don't flock to Parag Parik just after watching this video. Look at your goals, look at your requirements and then take it. I'm using it as an example. तो जैसे वो फंड में अगर कोई 12 लाख डालता है, अगर SWP फैसिलिटी अवेलेबल है, इवन वी विल हैव टू चेक वेदर इट्स देयर, बट इफ़ इट इज़ देयर, देन वैसे फंड्स आपको 15% या 15 से 18% हर साल ग्रो हो सकते हैं. ऐसे 2 अग्रेसिव फंड्स आप फोर्थ एंड फिफ्थ पैकेट में डाल दीजिए. इस तरह पूरा जो आपका 60 लाख है, दैट्स डिवाइडेड इनटू SWPs. सिस्टमैटिकली यू कैन विड्रॉ. एंड स्टॉक्स वाला जो फर्स्ट पैकेट है, उसमें भी अगर आपको लगता है कि काफ़ी रिटर्न हो गए, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिपेंडिंग कहाँ से विड्रॉ करना है आप विड्रॉ कर सकते हैं. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो ये 5 पैकेट्स का हम लोग एक बेसिक ब्रेकअप वी काइंड ऑफ सजेस्ट एंड वी रेकमेंड
एंड बेस्ड ऑन दिस पैकेट देन यू कैन डिसाइड विच शुड बी द फंड, विच शुड बी कहाँ एलोकेट करना है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं ना, योर एज, योर फैमिली गोल्स, योर चिल्ड्रन गोल्स, योर एजुकेशन, उनके हेल्थ के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है. सो दैट्स वाई फॉर आवर प्रीमियम मेंबर्स हम लोग क्या करते हैं कि जब व्हेन वी ऑर्गेनाइज कॉल्स एंड सेशंस विद देम, सो उनके लिए कस्टमाइज्ड एक पूरा प्रॉपर प्लान बना के उनको दे देते हैं. बट दिस वे ट्रस्ट मी, इवन इफ़ यू आइडेंटिफाई टू अग्रेसिव फंड्स, वो थर्ड पैकेट जो था वो एक बेसिक एवरेज लिक्विड फंड भी हो सकता है, या इट कैन बी एन एवरेज डिसेंट फंड विच इज़ गिविंग 9% रिटर्न्स, कोई अच्छा सा फंड जिसमें सेफ्टी ज़्यादा है, समथिंग लाइक दैट. एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पैकेट तो यू ऑलरेडी नो, आई स्पोक अबाउट इट. तो ऐसे अगर आप डिवाइड करो, सो दिस 60 lakh कैन एक्चुअली गिव अस अ लॉट ऑफ गुड मनी, monthly withdrawal plus capital appreciation. So have a good day, keep profiting, and always remember, please be sensible in money allocation. Don't go overboard, don't follow the herd mentality. Be sensible and be reasonable with your money.